फैंटास्टिक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर माई पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ नो ग्लू नो बोरॉक्स लाइन जो मैंने पिछले वीक जब भी अपलोड की थी। तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। आज हम लोग आपकी स्लाइम्स ट्राई करने वाले हैं इन दिस पार्ट 2 ऑल्सो। सो मैं आज आप लोगों के लिए थोड़े से नो ग्लू और थोड़े से नो बोरॉक्स लाई हूँ। गाइज, जब मैं बोलती हूँ नो ग्लू एंड नो बोरॉक्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि थोड़े से रेसिपीज नो ग्लू होंगे और थोड़े से रेसिपीज नो बोरॉक्स। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़े रेसिपीज में सिर्फ ग्लू नहीं यूज होगा, थोड़े रेसिपीज में बोरॉक्स नहीं यूज होगा। दैट इज हाउ दैट टाइटल नो ग्लू नो बोरॉक्स वर्क्स फॉर मी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है वो है ये। सो इट इज अ नो बोरॉक्स रेसिपी। सो दिस रेसिपी इज फ्रॉम नबील शेक एंड दिस इज अ पाउडर स्लाइम जिसमें हम लोग एक्टिवेटर यूज नहीं करेंगे, बोरॉक्स यूज नहीं करेंगे। Hey Fantastics, this is a break in this video. So if you guys haven't already heard about Mojo Bars, I have a sponsorship with them. So अगर आप लोग मोजो बार्स खरीदते समय मेरा रेफरल कोड जो कि है मोजो फरहाना, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको टोटल चेकआउट के टाइम पे 10% डिस्काउंट मिलेगा विथ एवरी प्रोडक्ट ऑफ देयर। सो आपको जो भी लेना है आप वो अपने कार्ट में ऐड कर लें। एंड गाइज, आपको निकलते समय चेकआउट के टाइम पे डिस्काउंट कोड यूज़ करना है मोजो फरहाना। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑर्डर इफ़ यू गाइज वांट सम एंड नाउ एंजॉय द वीडियो। गाइज, यहाँ पे हमारा स्लाइम बोल एंड अब हम लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे। सो हमें इसमें थोड़ा फेविकॉल चाहिए। सो लेट्स पुट अ लिटिल बिट ऑफ फेविकॉल इन आवर बोल। लाइक दिस मच। एंड इसमें इन्होंने नहीं कहा है कि हमें पानी से हमारे फेविकॉल को डिसॉल्व करना है या नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इट विथ वाटर। सो लेट इट बी हाउ इट इज, लाइक इन द थिक कंसिस्टेंसी। So the next ingredient is body lotion. So let's add some body lotion. Yeah, like this much. Or now we are going to add some cooling powder. So आप कोई भी कूलिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नवरत्ना है, नॉट स्पॉन्सर्ड, whatever. So yeah, let's add this into our slime. I don't know कि we should mix this or not. Let's mix this first. और उसके बाद हम लोग नवरत्ना कूल टैल्क ऐड करेंगे इसमें। You can use any cooling powder. He said any cooling powder. So yeah, I am adding this navratna. So yeah, let's add it now. Oh my god. So he told me to add a large quantity of cooling powder. So let's add, and oh my god, the fumes. As you guys can see here, oh my god, I can't breathe right now. But this is how our glue is doing. I hope this activates because the smell is too much. Oh my god. So this is how our glue is looking. I think हमें थोड़ा और पाउडर ऐड करना चाहिए। I don't know what the powder will do, but the glue is thickening up, I guess. So let's add a little bit more powder and let's mix.
So guys, this is how so far our slime is looking. It is forming, I'm not going to lie, it is like this thing, but we need to add a lot of powder for this to get solid. So keep that in mind. A lot of kneading and like literally इतनी देर से मैं अपने हाथों से ये बना रही हूँ और अब जाके ये थोड़ा बहुत स्लाइम के जैसे बना है इसकी कंसिस्टेंसी. So this does form slime, but this is kind of weird. But हम लोग इसको normal consistency में ला सकते हैं if we add a little bit of lotion. So let's see if we add a little bit of lotion, इसकी texture change होता है या नहीं. So let's add some lotion. And let's add. It's so white you almost can't see this. Let's mix our slime together. Let's knead it a little bit. So guys, after a little bit of kneading, this is coming together and I'm pretty sure अगर आप लोग इससे खेलते रहेंगे तो this will also be a lot stretchier. So yeah. So guys, this recipe works and I give this recipe a 7 out of 10 because this is pretty messy and पर I'm pretty sure कि ये थोड़ी देर के बाद काफ़ी stretchy हो जाएगी क्योंकि मैं 5 मिनट से ही इसे नील कर रही हूँ and this is pretty stretchy right now. So I can imagine कि आधे 1 घंटे के बाद ये super stretchy हो जाएगी. Like आपको बस इसके साथ खेलना है और इसको नीड करना है and it will be super stretchy. So yeah, this is a working recipe. So yeah, let's get to our second recipe. So now the next recipe is actually a hand sanitizer recipe. So guys, I know because of this situation हमारे घर पे काफ़ी सारा sanitizer है और काफ़ी सारा hand wash है and you guys wanted me to test some no glue, no borax hand wash and sanitizer kind of recipes. So आप लोगों में से ही एक की recipe में वो है. So yeah, let's try and let's see if this really works. और guys, आप please अपनी ये वाली चीज़ें waste मत कीजिए क्योंकि in this pandemic it's very important to have sanitizer and hand wash. So please don't waste. I am trying it for you guys, but please don't waste these kinds of things. At least if it doesn't work, then please don't waste. And if it works, then we'll have some slime to play with. So yeah, let's see. So fantastic. As you guys can see on your screens, this recipe is from Harshada. And the recipe is take a bowl and spoon obviously. So take some hand wash. So right now I have some Lifebuoy. So I'll take this. So yeah, let's take a little bit of it. So yeah, this is how much I have taken. Okay guys, you know I don't really believe in no glue and no borax recipes. Like वो कभी work करते हैं and I have almost tried all kind of recipes. So I am a bit skeptical about this. But yeah, let's try still. So this is hand wash and then guys, this is salt. I have pink Himalayan salt in my house. That's why these kind of things are here. But this is salt and I hope this will work. So let's add a little bit of salt. Yeah. And now let's mix this with the help of spoon. So yeah, let's mix. Like हमेशा ऐसे ही होता है, हम लोग immediately salt add करने के बाद ऐसा ही दिखता है कि form कर रहा है, but it never forms. So yeah, let's see. We have added our salt and now we have to add our sanitizer. So I am using this Dettol one. That's all I have at my home. So yeah, let's add a little bit of sanitizer and let's see what happens. As you guys can see, it's super liquidy. Nothing really happened. And the recipe told us to store this in fridge for 4 hours. So I'll store this thing
in my refrigerator for 4 hours, then we'll see कि क्या होता है इसके साथ. So guys, it has been 4 hours, or this is how our sanitizer slime looks. This is not slime, guys. This is a big fail. So this recipe gets a 0 automatically because this is a big fail. Guys, thank you so much for watching today's video. I hope you learned something from this, and please don't waste your ingredients at home. Like वो नो ग्लू नो बोरॉक्स स्लाइम्स नहीं बनते. मैं बोल बोल के थकी हूँ. फिर भी आई एम गोइंग टू ट्राई सम रेसिपीज फॉर यू गाइज. और अगर आपके पास और रेसिपीज हैं then comment down below, and thank you so much for watching. I love you all. You guys are amazing, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.